बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में इंडियन टेक्स्ट बुक्स के हिस्ट्री को बहुत चेंज करने की कोशिश की है और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही नहीं। इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तो शहरों के भी नाम बदल दिए। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। न्यूज़ 24 के हिसाब से तो योगी ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के मानकामेश्वर टेम्पल रख दिया। एनसीईआरटी के कुछ टेक्स्ट बुक से तो गांधी, गोडसे और आरएसएस के बारे में कुछ कंटेंट्स भी हटा दिए गए। पर बीजेपी ये सब क्यों कर रही है? बीजेपी को क्यों इंडियन हिस्ट्री के कुछ पार्ट से दिक्कत है, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। This is one of the most famous and recognizable architectural works in India. Mughal Emperor Shah Jahan commissioned the Taj Mahal to be built in the 1630s to memorialize his wife. 2014 में तो योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल को तेजो महल नाम से बुलाया था और बोला था कि ताजमहल एक पार्ट है एक एंशिएंट इंडियन टेम्पल का। ताजमहल के नाम पे ये इमेज पॉपुलर हुआ था जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लोग कह रहे थे कि ताजमहल के नीचे एक ऐसा फाउंडेशन है, जबकि इसका ना कोई साइंटिफिक बेसिस था और ना ही किसी के पास कोई इसका ढंग का सोर्स था। बस एक इंसान ने पिक्चर बना दिया और बहुत सारे लोग आज तक इसको शेयर कर रहे हैं। इस टॉपिक पे कोर्ट में केस भी हुआ था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि ताजमहल एक टूम्ब है, ना कि एक टेम्पल। But the history behind the empire could soon be taught differently. And that's because in 2023, a whole chapter on Mughals was removed from textbooks in India. एनसीईआरटी का कहना है कि टेक्स्ट बुक चेंजेस के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि ये जो टॉपिक डिस्कस्ड हुए हैं ये पहले क्लासेस में पढ़ाए गए थे। लेकिन ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में आती है वो अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक को चेंज कर देती है। यहाँ तक कि ये 2002-2003 से ही चले आ रहा है, जब वाजपेयी गवर्नमेंट। कांग्रेस ने भी 2011-12 में कुछ कार्टून्स हटाए थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर को क्रिटिसाइज कर रहे थे या मॉक कर रहे थे। With Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party or BJP championing Hindu nationalism, the deletion of the Muslim Empire's history hardly seemed like a coincidence. In the 2023 textbook revision, sections about Darwin's theory of evolution and Mahatma Gandhi's assassination by a Hindu nationalist gunman have also been removed. History textbooks have long been a BJP battleground. The government-run National Council of Educational Research and Training, or NCERT, was established over a decade after India's independence from Britain. The textbooks that had been continued to be used in the first 10 years or so were the old ones which had been written during the British period, and they presented a very colonial view of Indian history. Mridula Mukherjee is one of nearly 250 historians and educators who signed a public letter protesting the NCERT's latest changes to textbooks. What we also had by the beginning of the 60s was beginnings of a resurgence of this religious nationalism in the political sphere. In 1977, the Janata Party, parts of which later became the BJP, won its first majority in parliament and challenged NCERT history books for being too friendly to Muslim rulers. बहुत से स्कॉलर्स के हिसाब से वॉर रिलेटेड डेट्स पहले के मुकाबले में, मान लो 500,000 साल पहले के मुकाबले में आजकल बहुत कम हो गए हैं। बहुत सारे सोशल इविल्स का स्केल भी बहुत कम हुआ है। पहले लोग बर्थ के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा वायलेंस करते थे। आज के टाइम पे ये रिलेटिवली कम हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक्सक्लूसिव तो मुगल नहीं था, सिर्फ मुगल लोग ही नहीं थे जो वायलेंस करते थे। इंडिया में भी बाकी किंग्स वगैरह वायलेंस करते थे, या फिर कास्टिज्म वगैरह तो प्रॉब्लम था ही। लेकिन बाकी सब सोशल इविल्स, बाकी सब इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस, भले ही कोई जीनोफोबिक वायलेंस हो, कोई जेंडर वायलेंस हो, कोई कास्ट वायलेंस हो, वो सबको उससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। आज का सिचुएशन 500-600 साल पुराने सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन आज के टाइम पे कुछ लोगों को 400-500 साल पहले जो मुगल अट्रॉसिटीज़ किए थे वो बड़ा याद आता है, और उनका यूज़ करके लोग मुस्लिम्स के खिलाफ आज के टाइम पे हेट फैलाते हैं, जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। But the textbooks survived after public and political controversy. The next push to change history came when the BJP came into power in the late 90s. The BJP became the ruling party after it pushed a Hindu nationalist agenda, and some BJP politicians built a climate of anti-Muslim hate and violence. And the party attempted to change the history books again. The government first removed well-respected historians from positions of power and placed political appointees and non-historian nationalists on a government council that grants funding to scholars. The BJP released new textbooks in the early 2000s, which were heavily criticized for having factual errors and what some said was a falsified or distorted history. These textbooks were quickly scrapped after the BJP lost office. But as the saying goes,
Third time's a charm. Once in power again in 2014, Modi's government wasted no time before appointing a new culture minister, Mahesh Sharma, a Hindu nationalist with a history of making anti-Muslim comments. महेश शर्मा की कुछ बातों पे पास्ट में बहुत कंट्रोवर्सी भी हो चुका है। एक बार महेश शर्मा ने बोला था फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया शुड अवॉइड वेयरिंग स्कर्ट्स और गोइंग अलोन एट नाइट। इस पे अपोजिशन पार्टीज बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। और एक बार महेश शर्मा ने बोला था कि एपीजे अब्दुल कलाम इज अ नेशनलिस्ट डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम। जिस पार्टी का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट का सीएम हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहता है, हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते रहता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन नेशन के आइडियल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, उस पार्टी के लोगों को मुस्लिम्स के पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है। A 14-person committee was also appointed to rewrite Indian history and establish that India's earliest inhabitants were the ancestors of modern Hindus. Sharma said a Hindu-first version of Indian history would become part of a standard curriculum, and this is central to the entire story. See, after India's founding, the country's dominant political parties championed secularism for decades. But when the BJP came to power, that started to change. Remember that the BJP is a Hindu nationalist party closely associated with the Rashtra Swayamsevak Sangh, or RSS. That's an organization that champions Hindutva, an ideology that promotes the idea that India should be a Hindu nation. And it's incredibly well-funded and well-organized. The RSS's educational arms have run schools since the 50s, some of which teach Hindu scripture as historical fact. The educational arms run nearly 12,000 schools serving 3.2 million students. As the BJP's and RSS's influence has grown, Hindu nationalism has seeped deeper into the fabric of Indian society. कर्नाटका की बीजेपी गवर्नमेंट ने तो सर्कुलर निकाला था हिजाब बैन करने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में और स्कूल्स में। जिस गवर्नमेंट का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो, जिस गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर हटाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल कॉलेज में जाके एजुकेशन ले सकें, वही लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स के ऊपर हिजाब का प्रोहिबिशन लगा देते हैं। तो एक और बैरियर लग गया तुम्हारे एजुकेशन के ऊपर। अगर लोग नॉर्मल हो तो क्लासरूम में किसी के हिजाब पहनने से किसी का तो कुछ बिगड़ता है नहीं। मान लो कोई मुस्लिम स्टूडेंट हिजाब बैन की वजह से अपना पढ़ाई अगर मान लो छोड़ दिया या पढ़ाई में उसको दिक्कत हुआ, तब तो वो अपने फैमिली के ऊपर और डिपेंडेंट हो जाएगा, उसका जॉब्स वगैरह का क्राइटेरिया और ख़त्म हो जाएगा, तो उसको अपना फैमिली वगैरह का बात और ज़्यादा मानना पड़ेगा, उसको फिर ये हिजाब जैसे ट्रेडिशंस को और ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा अपने पूरे लाइफ में। कुछ लोग बोलते हैं हिजाब बैन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन ये एग्जैक्टली अपोजिट है। असली वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब वुमेन को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो वुमेन का जॉब बताता है कितनी वुमेन जॉब करती है, वो तो गवर्नमेंट बढ़ा पा नहीं रही है, लेकिन एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट बैरियर और खड़ा कर रही है कुछ कम्युनिटीज के मामले में। So there's a whole version of Indian history which forms the backdrop to their attempt today to set up a Hindu supremacist regime. Between 2022 and 2023, in the name of reducing school workload during pandemic recovery, the NCERT rolled out another round of textbook deletions. But what's targeted set off an alarm. An entire chapter about the history of the Mughal courts was deleted. This is very significant because it ties up with the whole anti-Muslim bias of the current politics. कुछ लोगों का कहना है कि मुगल हिस्ट्री पे हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ज़्यादा ही ध्यान देती है। एक बीजेपी एमएलए तो मुगल हिस्ट्री के साथ साथ ब्रिटिश हिस्ट्री भी जोड़ गए कि दोनों नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल लेवल पे। लेकिन इसके कुछ रीजंस है। पहली बात तो रीसेंट हिस्ट्री ज़्यादा रेलिवेंट होती है आज के टाइम के लिए, आज का कल्चर वगैरह समझने के लिए, आज के करंट इवेंट्स को एकदम प्रॉपरली अच्छे से समझने के लिए, कंपेयर टू बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हिस्ट्री 10,000 साल, 20,000 साल, 25,000 साल पहले की बातों को। और दूसरा चीज़ की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं टाइम के साथ साथ, और जो रीसेंट हिस्ट्री होता है उसका ज़्यादा रिकॉर्ड्स रहता है, उसको ज़्यादा अच्छे से फैक्ट चेक किया जा सकता है, उसके बारे में ज़्यादा फैक्ट्स अवेलेबल है, उसके बारे में ज़्यादा डेटा है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है कंपेयर टू बहुत पुराने कोई सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में। और इंडिया की रीसेंट हिस्ट्री में दो ही एम्पायर का सबसे बड़ा रोल था, मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म इंडिया को पूरी तरीके से इकोनॉमिकली बर्बाद ही कर दिया। पहले इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इंग्लैंड वगैरह से करीब 60% ज़्यादा था, लेकिन फिर वो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ब्रिटेन की भी इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। But it wasn't just erasing Muslims from history. Sections on democracy and diversity were deleted. The history of the Congress Party, a major political party for decades, and the BJP's main opposition today, was also erased.
The NCRT removed details on the hardships historically faced by Dalits under India's caste system, which divides people into separate social classes from birth until death. They also took out a chapter on rights movements by women, Dalits, and farmers' unions. Other controversial changes include the erasure of references to the RSS member who assassinated Mahatma Gandhi, as well as Gandhi's opposition to a Hindu-only India. There is strong discomfort within this ideology and these political formations with any notion that Hindus, certain sections of Hindus could have been discriminating against other sections of Hindus because it goes against the presentation of the entire Hindu past as something glorious and pure and something that has only to be venerated and not looked at critically. Also, lines were changed around the 2002 Gujarat riots, during which Hindu mobs killed around 1,000 Muslims. Modi was chief minister of the state of Gujarat at the time. A Human Rights Watch investigation found evidence linking Modi's office to the riots, with some sources even saying the riots had Modi's blessing. अल जज़ीरा के इस वीडियो में अगर किसी कोई फैक्चुअल मिस्टेक मिले तो मेरे को बता देना, मैं जाके बाद में एडिट कर दूँ। मैं अल जज़ीरा के हर क्लेम को तो फैक्ट चेक नहीं कर पाया हूँ, और ऑफ कोर्स कहीं भी राइट्स वगैरह हो रहा है तो उसकी चीफ मिनिस्टर, उसका स्टेट गवर्नमेंट जिसके ऊपर पुलिस का पावर रहता है, जो पुलिस को कंट्रोल करती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कंट्रोल करना राइट को, और अगर वो राइट्स कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो फिर उस स्टेट गवर्नमेंट की गलती हुई। Gujarat was also one of the first states to change its textbooks in the 90s. The historian Mushirul Hassan observed that in some Gujarat schools, students were taught that Islam only teaches atrocity. The whole ideology of the BJP and the RSS is based on a certain understanding of Indian history, a certain distorted, even falsified version of Indian history, where, as I said, the ancient pre-Islamic Indian past is presented as a glorious golden age, pure, unsullied, no blemishes of any kind. And then there is supposed to be a long period of suppression where the Hindu religion is suppressed. But Hindu first changes go beyond history books. Muslim or Urdu names of streets and cities have been changed into Hindu names. A right-wing Hindu organization painted Urdu or Muslim street signs black in 2015. One of them was later officially changed from a Mughal emperor's name to that of a pro-BJP Indian leader. See, this whole effort to change a name, to drop names which have any suggestion or resemble or sound like Muslim names, is part of the whole process of trying to invisibilize the minorities. Another thing that happens is ghettoization through discrimination, through sometimes targeted violence. It's a precursor often to genocide. Because the first thing that you do is that you wipe them out of any public space. This then becomes the foundation for more radical kinds of discrimination, exclusion. By manipulating history and cultural legacy, the BJP is erasing India's secular democratic tradition, the history of its Muslim residents, and even unfavorable incidents in the party's own past. Some argue that through this decades-long political agenda, the BJP is actively working to change what it means to be Indian, and perhaps most importantly, who gets to call themselves Indian. We see this attempt to change history, to distort history, as a kind of precursor to much worse things that could possibly happen. And which is why we are making a noise about it, because we think it must be stopped here. BJP's Hindu nationalist agenda has increasingly had real-life impacts, particularly on the country's almost 200 million Muslims. Many face housing and employment discrimination, and others have reported increased violence. The alarm has been set off because the BJP has now been in power at the national level for 9 years, and another election is coming next year. And as they are growing more and more confident and conscious of and willing to use state power for pushing their ideological agenda, things become more and more dangerous. वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा, डेली न्यूज़ कवरेज वगैरह लाते रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो।